Good evening, everyone, and best wishes new year. In the last year, we saw a substantial jump in the dollar index from the levels of 94 to almost 107. The bond yield, which was around 1.40, 2.10, it went to the levels of almost 5%. And despite that, our currency remained within the range of 81.50 and 83.50, which has prevented FIs from selling in the equity markets. Yes, they sold, but the quantum of selling was much lesser than the previous year. Domestic institutions consistently bought in the market. In fact, retailers helped to the markets to survive whenever there was correction in the market. Crude oil also remained within the comfort zone, and which has helped our markets to offset the decline in the domestic macros. So there are like a lot of things to know and more to understand, which Amar will explain. So over to you, Amar. Thank you, sir. Pankaj, can you share the PPT? So, जनवरी के जो स्ट्रेटेजी वेबिनार है इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी क्या हो रहा था दिसंबर में, मंथ ऑफ दिसंबर में हुआ था, और इंडियन मैक्रोस के बारे में बात करेंगे, और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, ग्लोबल परफॉर्मेंस और इंडियन मार्केट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, और ऑल देखेंगे कि ये मार्केट का वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा हो चुका है, तो उसका स्ट्रेटेजी क्या रहेगा और वैल्यूएशन किस पे ट्रेड कर रहा है, तो ओवरऑल इस हमारा ये थीम रहेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल गिव सम इन्वेस्टमेंट आइडियाज जो हमारे एनालिस्ट सब प्रेजेंट करेंगे. सो नाउ वी विल स्टार्ट द प्रेजेंटेशन. पंकज, यस. सो ओवरऑल अगर हम बात करें ग्लोबल इंडाइसेस की, अगर परफॉर्मेंस देखें तो कुछ डेटा थे बहुत इंपॉर्टेंट जो आए थे मंथ ऑफ दिसंबर में, जैसे कि यूएस के डेटा, एसएनपी ग्लोबल यूएस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया था, सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया था, एफओएमसी मीटिंग हुई थी, वहां पे भी डिस्कशन हुआ था, तो वहां पे भी काफी चीजें आई थी, और यूरोजोन में भी मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और सर्विस पीएमआई का नंबर्स आया था, और ईवीसी की मीटिंग हुई थी, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग हुई थी वहां पे भी. सो ओवरऑल अगर हम देखें तो नवंबर में हम देख रहे थे कि बॉन्ड यील्ड नीचे गिर रहा था, और दिसंबर में काफी अच्छा बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखी गई है, और फेड ने भी सिग्नल दिया है रेट कट का. सो इसके वजह से पूरा ओवरऑल मार्केट पूरा पॉजिटिव था, ग्लोबल मार्केट पूरा सेंटिमेंट पॉजिटिव था. और इंडिया के पर्सपेक्टिव देखे तो जो इलेक्शन हुआ था और बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था स्टेट इलेक्शन में, तो ओवरऑल जो इलेक्शन रिस्क था वो भी कम हो गया, तो इसके लिए मार्केट ने अच्छा रैली किया. और अगर दिसंबर में देखें तो निफ्टी ने 7.9% का रिटर्न दिया है, और सेंसेक्स ने 7.8% का रिटर्न दिया है, और ग्लोबल मार्केट से आउट परफॉर्म किया हमारे इंडियन मार्केट ने. और उसके बाद अगर देखें तो यूएस मार्केट, नास्डा, डाउ जोन एंड एस&पी 500 उन्होंने डिसेंट रिटर्न जनरेट किया है, और फॉलोड बाय यूरोपियन मार्केट, वहां पे भी अच्छा रिटर्न जनरेट हुआ है, और कुछ मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया, जैसे कि रशियन मार्केट हो गया, संघाई हो गया, निक्काई हो गया. तो इस तरह का पूरा परफॉर्मेंस था ग्लोबल. नेक्स्ट स्लाइड. जिस तरह हमने डिस्कस किया कि हमारा इंडियन मार्केट काफी आउट परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट अच्छा डिसेंट रिटर्न दिया है, अप्रोक्सीमेट 8% का रिटर्न था दोनों इंडेक्स में. सो इसलिए हमारे जो दूसरे इंडाइसेस हैं उन्होंने आउट परफॉर्म किया, जैसे बीएससी यूटिलिटी हो गया, वहाँ 20% रिटर्न जनरेट किया मंथ ऑफ दिसंबर में. अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस ने 12% रिटर्न किया है, बीएससी मेटल ने 11% रिटर्न किया है. अगर हम देखें तो बीएससी एनर्जी है, वहां पे 11% का रिटर्न आया. कैपिटल गुड्स में 11% का रिटर्न आया. सो ओवरऑल दीज आर द इंडाइसेस जिन्होंने बहुत आउट परफॉर्म किया मार्केट को. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी जो दूसरे इंडाइसेस हैं उन्होंने भी काफी अच्छे डिसेंट रिटर्न दिए इस महीने में. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देयर आर फ्यू पैरामीटर्स, जो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए, और काफी अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है ग्लोबल मार्केट में. अगर हम बात करें तो पहला जो टॉपिक है, जो मोस्ट इकोनॉमिक्स आर सीइंग अ मॉडरेशन इन द इन्फ्लेशन. अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर यूएस के इन्फ्लेशन की बात करें तो वहां पे हम क्लियरली ट्रेंड देख रहे हैं. अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक साल से तो नीचे गिर ही रहा है. अगर हम अगर नवंबर की बात करें तो 3.1% का इन्फ्लेशन रेट रहा है, और अक्टूबर में 3.2% का था, तो वहां पे 10 बेसिस पॉइंट का गिरावट आई है इन्फ्लेशन में. और अगर लास्ट 4 महीने की बात करें, अगस्त से देखें तो 3.7 से 3.1% गिरा है. तो कंटिन्यूस 4 क्वार्टर में तो 4 महीने में तो जो इन्फ्लेशन रेट है गिर ही रहा है यूएस का.
और अगर हम इसकी बात करें, यूरोप की बात करें, तो यूरोप में भी क्लियरली वहां पे भी दिख रहा है कि जो इन्फ्लेशन है नीचे गिर रहा है। नवंबर में जो था उसका रेट 2.4% था यूरोजोन का इन्फ्लेशन, और अक्टूबर में 2.9% था। तो 50 बेसिस पॉइंट का गिरावट देखा गया है। और अगस्त में से भी अगर हम यहाँ पर देखें तो 5.2 का इन्फ्लेशन था, उससे ड्रास्टिकली नवंबर में 2.4 हो गया। तो वहां पे क्लियरली दिख रहा है कि इन्फ्लेशन नीचे गिरा है। और अगर दूसरे भी जो मेजर इकोनॉमी है वहां पे भी दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं नीचे गिरा है। तो ओवरऑल इन्फ्लेशन डाउन हुआ है 4-5 महीने में, और ओवरऑल हमारा एक्सपेक्टेशन भी है, ग्लोबली एक्सपेक्टेशन है कि नीचे और इन्फ्लेशन और नीचे जाएगा। और इसी तरह से अगर हम देखें तो बॉन्ड यील्ड भी देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो बॉन्ड यील्ड है वो अप्रॉक्स 3.98% के करीब है, और जर्मनी का 2.0 समथिंग 2.1 के करीब है अगर बॉन्ड यील्ड देखें, करंट बॉन्ड यील्ड। और इस दिसंबर नवंबर में तो नवंबर में देखा जाए थोड़ा सा प्रेशर था बॉन्ड यील्ड पे, और दिसंबर में अगर हम देखें तो ओवरऑल 40 बेसिस पॉइंट का ड्रॉप है ओवरऑल बॉन्ड यील्ड में। तो वहां पे कहीं दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है, विच इज अ पॉजिटिव साइन। अगर हम क्रूड की बात करें तो मंथ ऑफ दिसंबर में इट वाज न्यूट्रल, मतलब लाइक रेंज डाउन रहा है 76 के करीब। और अगर क्रूड अभी तो कुछ रिस्क नहीं लगा क्रूड ऑयल में, अगर लेकिन अगर 90 के ऊपर पर बारी जाता है क्रूड ऑयल तो यहाँ पे हम एक नेगेटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। बट अभी फिलहाल तो जो क्रूड ऑयल का जो भी है ओवरऑल न्यूट्रल है, इतना प्रेशर नहीं है, बट ये रिस्क हो सकता है अगर 90 के ऊपर गया तो, 90 के करीब गया तो। और एफएमसी जो मीटिंग हुई थी वहाँ पे क्लियरली सिग्नल दिया गया कि जो रेट हाइक है वो अभी जो मीटिंग हुआ था 5.25 से लेकर 5.5 के रेंज टाइम में था और अंतिम था। बट ये जो पीक है वो 5.5 का अगर हम पकड़े, जो फेड रेट है, अगर हिस्टोरिकली का 10 साल में अगर देखें तो 10 साल से सबसे हाईएस्ट सबसे ऊपर का इंटरेस्ट रेट फेड रेट है। और ये सिमिलरली मोर लेस 2006 में सेम रेट है, और इसके बाद ड्रॉप हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि क्लियरली जो मीटिंग हुई थी लास्ट दिसंबर में वहाँ पे क्लियरली सिग्नल दिया कि ये पीक हो चुका है यहाँ से पॉसिबिलिटी रेट कट करने की। और जिस तरह से मीटिंग में होता है कि रेट इंक्रीज किया है और एक्सपेक्ट करें कि 3 रेट कट आएगा 2024 में, 2024 में। और जो रेट है 5.5 से 4.6 का रीच चला जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि देखेंगे तो इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, बॉन्ड नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली सिग्नल है कि यहाँ पे रेट कट आएंगे, और ये पूरा ओवरऑल ग्लोबल मार्केट एज वेल एज इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, अगर इंडियन मैक्रो की बात करें तो बहुत सारे डेटा आए थे इंडियन मार्केट में। तो पहला जीएसटी का डेटा की बात करते हैं। तो अगर जीएसटी देखे तो इंडिया का दिसंबर में 1.65 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ। तो जीएसटी जीएसटी का कलेक्ट सॉरी जीएसटी का कलेक्शन 1.65 सॉरी 1.65 का गुड्स एंड सर्विस का कलेक्शन हुआ था। जीएसटी का रेवेन्यू दिसंबर में आया था। और अगर देखें तो वो 6 महीने का लो है, बट हो गया अगर हम कंपेयर करें लास्ट मंथ से। वन सेकंड। तो जीएसटी की बात करें तो अगर हम जीएसटी का डेटा देखें तो जो अभी जनवरी में डेटा आया तो 1.65 ट्रिलियन का कलेक्शन हुआ जीएसटी का। और ये काफी लो है, 4-5 महीने का देखें तो लो नंबर्स आए। बट अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें इस मंथ से तो 10.3% का जंप आया। अगर अप्रैल टू दिसंबर का कंपेयर करें तो काफी डिसेंट है, 12% का कलेक्शन हुआ है। और ओवरऑल अप्रैल टू दिसंबर में हमने 14.97 ट्रिलियन का कलेक्शन किया है जीएसटी में। और आईआईपी नंबर की बात करें तो आई दिसंबर में जो आईआईपी नंबर आया था वो अक्टूबर का मंथ का था, और वो बहुत रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग था। अगर देखें तो 60 मंथ हाई था। अगर 16 महीना का निकालेंगे तो कंटिन्यूसली तो 60 मंथ हाई अक्टूबर का नंबर आया था, और अप्रॉक्स 11.7% का 12% का ग्रोथ आया था। और मेनली इसका रीजन ये था कि जो हमारा बेस था बहुत लोअर था, और दूसरा फेस्टिव सीजन पिकअप किया तो वहां पे ग्रोथ दिखा है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10.4% का ग्रोथ है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल में और कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15.9% का ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। और नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल में 8.6% का ग्रोथ दिख रहा है। तो काफी अच्छा नंबर था आईपी का। और कोर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट है, कोर एटी सेक्टर बोलते हैं, उसका वेटेज 40.3% है आईपी में। और वहां पे देखे तो उसका नंबर अगर देखोगे तो इसका नंबर थोड़ा लो था, 7.8% का 6 मंथ लो था नवंबर में जो आएगा। सो उसका मेन रीजन था क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन थोड़ा आउटपुट कम हुआ और सीमेंट में डिक्लाइन हुआ था, बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल ड्रैग हुआ।
अगर रिफाइनरी जो मेन की नंबर्स है उसकी बात करते हैं, रिफाइनरी प्रोडक्ट प्रोडक्शन का था 12.4% नवंबर में, और अक्टूबर में 4.2% था, थोड़ा ऊपर था। कोल प्रोडक्शन वाज 10.9% एंड अक्टूबर में 18.4% था, वहां पर ड्रॉप दिखा। स्टील प्रोडक्शन 9.1% था और अक्टूबर में 10.7% था। स्टील प्रोडक्शन में थोड़ा ड्रॉप था। नेचुरल गैस देखें तो 3.6% था और अक्टूबर में 9.9% था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इट वाज 5.6% इन नवंबर और अक्टूबर में 20.3% था। फर्टिलाइजर का भी अगर देखें तो थोड़ा ड्रॉप था और बट ग्रोथ था यहाँ पे अगर, लेकिन दूसरे जो प्रोडक्ट है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वाइज 0.4% था। अक्टूबर में 1+3% प्लस था। और सीमेंट प्रोडक्शन देखें तो वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन है 3.6% का एंड विच इज अगर हम देखें तो 7.4% का ग्रोथ था। ग्रोथ था। और ट्रेड डिफिसिट अपना नेक्स्ट नंबर है, ट्रेड डिफिसिट नंबर नॉर्मलाइज हुआ है नवंबर में। अगर देखे तो अगर उसका नंबर देखे तो $20 बिलियन का नंबर आया है ट्रेड डिफिसिट का। और मेन इसका रीजन था कि फेस्टिव जो डिमांड था थोड़ा म्यूटेड था, उसकी वजह से और प्लस ऑयल जो प्रोडक्ट इंपोर्ट था वो गिरा है ओवरऑल। सो बेसिकली इंपोर्ट गिरा है, उसकी वजह से नंबर काफी बैलेंस हो गए ट्रेड डिफिसिट से। वो क्लियर दिखता है, इसकी वजह से थोड़ा ट्रेड डिफिसिट का नंबर मंथ में नॉर्मलाइज हुआ। अगर हमारा एस्टिमेट देखोगे 25 का, तो कैट टू जीडीपी इट वाज अराउंड 1.4% हमारा एस्टिमेट है परसेंटेज का। और रिस्क ये हो सकता है इसमें कि जो एक्सटर्नल, जैसे कि अगर 1.4% हमारा जो प्रोजेक्शन है करंट अकाउंट डिफिसिट टू जीडीपी का, वो उसका रिस्क यही है कि अगर कुछ जो जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर इंक्रीज होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट क्रूड ऑयल ऊपर प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाते हैं, वोलेटाइल होता है, तो वहाँ पे प्रेशर आ सकता है। अगर करंट अकाउंट डिफिसिट का नंबर देखें लास्ट मंथ का, तो जो सेकंड क्वार्टर एफ 24 का नंबर आया था 1% टू जीडीपी था। और लास्ट लास्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर एफ 24 में 1.1% था पिछले क्वार्टर में। और अगर ईयर सेकंड क्वार्टर एफ 24 को कंपेयर करें सेकंड क्वार्टर एफ 23 में, तो वहाँ पर 3.8% का था, बड़ा नंबर था। तो यहाँ पे नंबर काफी अच्छा है, 1% करंट अकाउंट डिफिसिट टू जीडीपी का नंबर अच्छा था। और मोस्टली हमने इसे थोड़ा हमारा पहले हमारा प्रीवियस प्रोजेक्शन था करंट अकाउंट डेफिसिट टू जीडीपी 1.6% और हमने इस पे 1.4% किया है। अगर हम सीपीआई की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तो नवंबर में इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ा है। इसके प्रीवियस मंथ में अक्टूबर में 4.9% था और इस महीने में जो नवंबर मंथ में 5.6% था। सो मेनली उसका रीजन ये है कि वेजिटेबल प्राइसेस हैं, वो उनके वहाँ पे ज्यादा प्राइस हाइक हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो वहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा। बट और इन्फ्लेशन देखोगे तो 4.1% है। हेडलाइन इन्फ्लेशन हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ में अबाउट 5% रहेगा ओवरऑल। और हमारा एस्टिमेट है फॉर 24 टू 24 और 25 में 5.4% का। 24 में हम एक्सपेक्ट करें इन्फ्लेशन और 25 में 4.7% का थोड़ा ड्रॉप एक्सपेक्ट करें। अगर दिसंबर की अगर आरबीआई पॉलिसी की बात करें, तो यहाँ पे जो रेपो रेट था अनचेंज था 6.5%। और लेकिन जो ओवरऑल टोन था बहुत कॉशियस था, बिकॉज देयर इज नो क्लियरिटी इन द डोमेस्टिक फूड प्राइसेस और क्रूड ऑयल प्राइसेस। थोड़ा वो टोन थोड़ा कॉशियस था रेट कट के लिए। नेक्स्ट है आउटलुक वैल्यूएशन की बात करें, तो ओवरऑल अगर हम देखें मार्केट में, तो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक फंडा, जो मैक्रो इकोनॉमी जो हमारा फंडामेंटल है इंडिया का, वो अच्छा है, डिसेंट है। और स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है कि जो ग्लोबल लोअर ग्लोबल इंटरेस्ट रेट होगा बिकॉज ऑफ जो ड्रॉप हो रहा है हेडलाइन इन्फ्लेशन कोर इन्फ्लेशन में मेजर इकोनॉमीज में, तो वहां पे चीजें चीजें फेवरेबल हो रही है, और जो हमें इन्फ्लेशन में दिख रहा है ऑलरेडी और बॉन्ड में दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो इंडिया की पर्सपेक्टिव से जो रिस्क था, बीजेपी का इलेक्शन का रिस्क था, और इलेक्शन बीजेपी ने जो स्टेट इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म किया वो रिस्क खत्म कर दिया है। इसके लिए ओवरऑल मार्केट का वैल्यूएशन अभी जो है एलिवेटेड लेवल पे रहेगा, ऊपर की तरफ भी रहेगा। और लेकिन हमारा जो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए 2024 में इन्वेस्टमेंट करने का, तो लो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए रिटर्न का, क्योंकि मार्केट का वैल्यूएशन काफी है, मार्केट ने काफी रैली किया है, तो काफी स्टॉक एक्सपेंसिव हो गए, तो यहाँ पे थोड़ा अपसाइड बहुत कम बचता है अब मार्केट के लिए अगर देखें तो। हाँ, अगर कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज आता है मार्केट में, तो डेफिनेटली यहाँ से रैली आ सकती है, बट वो वैल्यूएशन हमेशा हायर पे रहेगा। अगर निफ्टी 50 का अर्निंग देखें, तो 24 में एफ 24 वी आर एक्सपेक्टिंग 18% ग्रोथ एंड ईपीएस इज 974
एंड FY20 में 10.6% का ग्रोथ पकड़ रहे हैं हम, और हमारा EPS है 1084 रुपीज। और उस हिसाब से जो पी बन रहा है FY24 पे 22.3 का एक्स का पी बन रहा है, और FY25 पे 20x का पी बन रहा है, निफ्टी की पी बन रही है। सो बेसिकली अब क्या करें, मार्केट में अब स्टॉक तो रैली कर चुका है और स्टॉक भी चल चुका है और काफी मार्केट वैल्यूएशन हाई पे है, तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो हमारी स्ट्रैटेजी कॉशियस होनी चाहिए। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, तो जब भी एक मार्केट में डिप मिलता है तो वहां पे इन्वेस्ट करना अच्छा स्ट्रैटेजी रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप जो भी स्ट्रैटेजी, जो भी हमारा मार्केट में स्ट्रैटेजी रहेगा, जो हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, हमारी जो डीप आएगी मार्केट में, तो वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और मोस्टली हमें फंडामेंटल जो अच्छे स्ट्रॉन्ग अच्छे स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी की स्टॉक है, वहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना है। और मोस्टली हमारा प्रेफरेबल सेक्टर होगा BFSI, रियलिटी और फार्मा। उस इस सेक्टर में अच्छी क्वालिटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। सो अगर हम निफ्टी का, अगर हम पी चार्ट देखें ओवरऑल, अगर हम देखें, सो अगर हमने हमारे पास 2000 से लेके अब तक का निफ्टी का वैल्यूशन है, और अगर हम देखें तो एवरेज जो पी है 16 के क्लोज आ रहा है, और अभी एज ऑफ नाउ 20-30 के ऊपर पी ट्रेड कर रहा है। अगर 10 साल का अगर हम देखें तो काफी से ऊपर हो जाएगा एवरेज पी। सो डेफिनेटली हमारा जो मल्टीपल है जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो हायर वैल्यूशन कर रहे हैं, और वो एवरेज जो हमारा 10 साल का है उसके ऊपर अगर 20 काफी लंबा समय का लेंगे तो वहां से हिस्टोरिकल से हम ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वैल्यूशन हायर दिखा रहा है, और जैसे मैंने बताया कि जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की कॉशियस, वो होनी चाहिए। सो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे स्टॉक वाइज कि क्या हमारा स्टॉक कौन सा अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट स्लाइड फॉर द स्टॉक। सो हमारी स्टॉक आइडियाज। सो पहला हमारा स्टॉक आइडिया था ICICI बैंक, और हमारा टारगेट है 1050 रुपीज और बाय रेटिंग है। सो बेसिकली ICICI बैंक ने 34% रिटर्न, 35% अर्निंग ग्रोथ रिपोर्ट किया, मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। 20% ग्रोथ आया था, और जो लोन ग्रोथ था 18% हेल्दी था और ब्रॉडर बेस पे था। अगर ओवरऑल देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम 23% का ग्रो किया है, बट अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखो तो 45 बेसिस पे क्यों हमको डिक्लाइन हुआ है, जो विच इज लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशन। हमने एक्सपेक्ट किया था कि गिरेगा, बिकॉज एक दो क्वार्टर से यही हो रहा है और अक्रॉस द बोर्ड हो रहा है। इंटरेस्ट पे प्रेशर आ रहा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे। एसेट क्वालिटी इंप्रूव था और काफी इंप्रूव कर रहा है, और दैट इज फाइन, कोई वहां पे प्रॉब्लम नहीं था। ROE कंपनी का 19% था, और ROE 2.4% विच इज हेल्दी। और हमारा जो फेयर वैल्यू 1150, और वी हैव बाय रेटिंग इन दैट। फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जिंदाल स्टील एंड पावर। सो वी हैव फेयर, हमारा 800 रुपीज का फेयर वैल्यू है जिंदाल स्टील पावर। सो अगर हम देखें सेकंड क्वार्टर FY24 में जिंदाल एबिटा लेवल पे मार्जिन थोड़ा बिलो आर एस्टिमेट्स था, मोस्टली वीकर रियलाइजेशन। और जो एबिटा था 2213 का, 2000 जो एबिटा था काफी लो आया था। अगर अगर एबिटा देखेंगे तो 15% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर था, और 16% ग्रोथ क्यू ऑन क्यू था। सो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि थर्ड क्वार्टर में FY24 में मार्जिन बेटर होगा, मेनली बिकॉज ऑफ द टू रीजन, वन प्राइस हाइक एंड दूसरा रैंप अप इन द कैप्टिव माइनिंग। तो वहां से हमारा मार्जिन की रिकवरी होगी, और वे एक्सपेक्ट करें कि हम मार्जिन बेटर होगा आगे जाके। अगर हम देखें तो GSP की जो कैपेसिटी है, हिस्टोरिकली देखा तो कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रो किया है, कैपेसिटी एक्सपेंशन एक्सपेंशन किया है। और हम लोग FY23 से 26 में देख रहे हैं 65% कैपेसिटी एक्सपेंशन ग्रोथ CAGR। और कंपनी की एक अच्छी पॉइंट मेरे को ये लगी, कैपिटल एलोकेशन फ्रेमवर्क जो है बहुत बैलेंस है, ग्रोथ और लिवरेज में। कंपनी जो भी पैसा इन्वेस्ट करती है वो स्टील में करती है, स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट में करती है, इंडिया में स्पेशली इन्वेस्ट करती है। तो उस तरह से जहाँ पे लिवरेज भी कर रही है और ग्रोथ को भी उस तरह से मेंटेन कर रही है। सो ओवरऑल हमें ये स्टॉक अच्छा लगता है, और फेयर वैल्यू 800 रुपीज है, और हमारा बाय रेटिंग है। तो द नेक्स्ट स्लाइड अमित। थैंक यू अमर। हमारा नेक्स्ट रिकमेंडेशन है पीवीआर आइनॉक्स। उसमें हमारा एड रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 1850। पीवीआर आइनॉक्स का जो प्रीवियस क्वार्टर परफॉर्मेंस था वो काफी वेल राउंडेड था। इनफैक्ट प्रीवियस क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था वो पीवीआर के लिए बेस्ट एवर था ऑन वेरियस पैरामीटर्स एंड फाइनेंशियल मेट्रिक्स। फुटफॉल्स इंक्रीज हुए हैं 63.5% ईयर ऑन ईयर टू 48.4 million with occupancy of 32.3%. It was sharply up from 22.3% in Q1 of FY24.
इसमें बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस विटनेस किया है, स्ट्रॉन्ग बैक किया है आफ्टर subdued performance over the last few quarters. The other two, जवान, रॉकी और रानी, ड्रीम गर्ल 2, ओ माय गॉड 2 के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के वजह से इस क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। रीजनल सक्सेस भी मिला है पीवीआर को फ्रॉम मूवीज लाइक जेलर, कैरी ऑन जनता 3 एंड हॉलीवुड मूवीज लाइक ओपनहाइमर, MI7, which resulted in strong footfalls during the quarter. टिकट सेल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग थे, 1120 करोड़ का परफॉर्मेंस दिखाया है, which has grown 109% year on year, while average ticket price grow हुआ है 25% year on year, 2 rupees 276. It was again led by blockbuster films and also on a weak base. Ad revenues 40% up थे year on year and convenience fees भी बढ़ा है 23% year on year. पीवीआर आइनॉक्स ने नेट एडिशन किया है 18 स्क्रीन्स का Q2 में और is on track to add 60 new screens in FY24. नेट डेट भी डिक्लाइन हुआ है to 1100 crores from 1510 crores in the previous quarter. It was led by strong cash flow generation. मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है फ्री कैश फ्लो होगा FY24 में. We believe recovery in occupancy footfalls partially eases concerns around structural problems for the company. Consistency in performance is key for sustainability of valuations. हमारा प्रोफॉर्मा एस्टिमेट फैक्टर करता है 29.5% ऑक्यूपेंसी इन FY25 एंड FY26 वर्सेस प्री पैंडेमिक लेवल्स ऑफ 32%, और हमारा फेयर वैल्यू है 1850 और हमारा रिकमेंडेशन है एड ऑन पीवीआर. सो पीवीआर आइनॉक्स इज एन एड विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1850. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ओवर टू अरुण. Thank you, Amit. In the hotel space, we like Sami Hotels, where we have a fair value of 230 and a buy rating. अगर आप सामी होटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी के पास थर्ड लार्जेस्ट इन्वेंट्री है ऑपरेशनल रूम्स या कीज की, जिसमें बोथ ओन्ड और लीज्ड है इंडिया में. एंड ये जो पूरी की पूरी इन्होंने जो बनाई है लार्जली एक्विजिशन लेड स्ट्रेटेजी से बनाई है. In their current portfolio, if you look at, it's around 4,801 keys or rooms, which has been built over the period of 13 years of incorporation. And they have been among the fastest growing hospitality companies in India. So I mean, what exactly they do? So what they have done is they have been aggressively acquiring some dislocated or underperforming hotel assets in the past and turned around those assets through rebranding with international brand hotel chains, जैसे कि Marriott, IHG or Hyatt. They have been also been refurbishing and actively managing these assets. Now, इसके वजह से क्या हुआ है? इसके वजह से ये हुआ है कि सामी के जो एवरेज रूम रेट्स हैं, इनके जो रूम्स के एवरेज रूम रेट्स हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, ऑक्यूपेंसी इंप्रूव हुई है, जिसकी वजह से इन्हें बेटर रेवेन्यू और एबिटा मिला. Now, Sami also, get benefit from the diversification because इनके आप प्रॉपर्टीज देखेंगे तो they are spread across cities, अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पर है. एंड जैसे मैंने कहा कुछ डिफरेंट होटल ऑपरेटर्स है जैसे मैरियट, IHG और हयात है. Now, this reduces the impact of market volatility in any of the key markets. So, कभी-कभी क्या होता है कि आपका कोई स्पेसिफिक रीजन में या ज्यादा आप क्लस्टर्ड हो होटल्स लेकर के या होटल्स लेकर के, तो वहां पर इन केस वहां पर थोड़ा स्लो डाउन है या कुछ और रीजंस की वजह से प्रॉब्लम है तो आपका इम्पैक्ट होता है रेवेन्यूज, मार्जिन्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो सब इम्पैक्ट होता है. बट इन दिस केस बिकॉज दे आर स्प्रेड आउट तो उसका इम्पैक्ट कम होता है. The other thing is that the multi-brand and segment business models enables Sami to capitalize on the expected growth in different hotel segments. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे तो इसके लिए एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है स्टडी इंप्रूवमेंट इन रूम रेट्स. ये हमें लगता है कि ये कंपनी के लिए बहुत की अर्निंग्स ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है. हमने देखा है कि रूम रेट्स जो होटल्स हैं रिसेंट टाइम्स में बढ़े हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 10% CAGR सामी के होटल्स के रूम रेट्स में इंक्रीज होने के. एंड दिस वुड बी पीरियड ओवर FY23 to 26. अगर आप रेवेन्यू पे देखें तो वी आर लुकिंग एट 24% इंक्रीज इन द रेवेन्यू CAGR एंड अराउंड 27% increase in CAGR EBITDA on a CAGR basis over FY23 to 26. उनके मार्जिन्स भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंप्रूव होंगे. दैट वुड बी वन. एक रीजन ये होगा कि इन्हें ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा
बिकॉज जैसे जैसे आपकी रेवेन्यूज इंप्रूव होगी और इनके कॉस्ट जो होते हैं वो काफी फिक्स्ड होते हैं इनमें, तो उसके वजह से आपको काफी सारा जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो सीधा आपको एबिटा के थ्रू फ्लो होगा। एंड सेकेंडली इज द इंटीग्रेशन ऑफ द रिसेंटली अक्वायर्ड एसीआईसी पोर्टफोलियो। इन्होंने अभी रिसेंटली एसीआईसी कुछ महीनों पहले लिया था, वो अभी इंटीग्रेट किया है इन्होंने, जिसकी वजह से वी एक्सपेक्ट दैट वुड आल्सो हेल्प देम इम्प्रूव margins, because what they'll be able to do, they'll also be able to review the existing franchise agreement with the global brands, and that should also bring about some additional cost savings from them. ये हो गए रेवेन्यू और एबिटा साइड की। अगर आप बैलेंस शीट साइड देखें, वहां पर आप देखेंगे तो कंपनी ने पिछले, जब से इनका इनकॉर्पोरेशन है, तो वहां पे कंपनी ने कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट दोनों यूज किए हैं एग्रेसिव ग्रोथ करने के लिए होटल एसेट्स में, बिकॉज हमने कहा है कि कंपनी काफी एक्विजिशंस करती है, तो इन्हें obviously they require money for that, so they have used both equity and debt in the past. And we estimate however that there could be some moderation in their capex going ahead, और उसके वजह से कैश फ्लोज भी थोड़े इंप्रूव होंगे। और रिसेंटली कंपनी ने आईपीओ में भी, मार्केट में से जो आईपीओ आया था उनमें जो उन्होंने डेट जो इक्विटी रेज की थी, वो जो इक्विटी रेज की है और इसके साथ जो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे, उससे ये दोनों रीजन से हमें लगता है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इंप्रूव होगा आगे चल के, और उसके वजह से इनकी बैलेंस शीट थोड़ी डीलेवरेज हो सकती है यहाँ से। सो कंपनी को हमने डीसीएफ मेथड पे वैल्यू किया हुआ है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पे, और ये हमारा बाय है इस पे विद अ फेयर वैल्यू 2। थैंक यू, ओवर टू पंकज। Yeah, thank you, Arun. So another stock that we are discussing is Mahindra Holidays and Resorts India Limited. So where we have ad rating and fair value of 430 rupees. So this is another hospitality stock that we are recommending in this month. Reason is very clear that we are very much positive on the business of the company. We have recommended this stock earlier also, and the stock has done well. And we believe that there is enough potential in the stock to do well in the coming future. So अगर महिंद्रा हॉलीडेज का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग है vis-a-vis ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक मेंबरशिप बेस्ड बिजनेस मॉडल है. सो दे आर इनटू वेकेशन ओनरशिप बिजनेस, एंड इसमें मेंबर्स ऑन बोर्ड होते हैं एंड दे कंटिन्यू फॉर ओवर लॉन्गर period. So that ensures your revenue visibility for very long term. Plus, if you look at overall business model, so that also ensures sustainability in terms of cash flows generation as well. ये Mahindra Holidays vacation ownership में market leader है, and they have over 25 years of history in the business, and they have more than 100 Club Mahindra resorts across the country, and more than 5,000 rooms. In fact, they're also present in Europe, through their subsidiary HCR, and they have 33 timeshare spa hotels and 33 timeshare hotels and 9 spa hotels. Business model is different, and that takes care of any cyclicality in the industry. So that we have seen in the pandemic time also, the company was able to report better than its peers in terms of occupancy, even in terms of revenue and profitability. If you look at overall plans of the company intends to double its room inventory from 5,000 rooms to 10,000 by FY30. So they have a huge plan. And इसको fulfill करने के लिए they have the cash flows also. अगर उनके standalone cash flow आप देखेंगे, net cash on the books देखेंगे, तो वो करीबन 1170 crore है, तो जो कि काफी strong है. And we have seen early sign of inflection also in the business, where the membership growth has picked up and overall room inventory addition has also picked up. तो ये clear indicate करता है कि आगे का future जो growth है, that is going to be strong. और उसके अलावा जो यूरोपियन सब्सिडरी जो कि हॉलिडे क्लब रिजॉर्ट, वहां पर अगर कुछ मेजर टर्न अराउंड होता है, अगर इफ दे आर एबल टू रिपोर्ट द परफॉर्मेंस व्हाट दे हैव रिपोर्टेड इन द पास्ट, लाइक इन FY18, and the company reduces stake in that, sell the stake in that, so that will take care of the consolidated debt also. So in that way, that is a major trigger which can be possible if that happens. We expect revenue and PAT of the company to grow at a CAGR of 13.5% and 22.6%, 20.6%. And
we believe that the company can do well. We have ad rating on the stock, and we have a fair value of 430 rupees, which is based on sum of the parts value. So on Mahindra Holidays, we have ad rating and fair value of 430. So with this, we have come to the end of presentation, and now we will be discussing the Q&A. So the forum is open for Q&A session. Over to Rini. Thank you, Pankaj. Uh, that was our presentation on strategy for the month. Guys, please use this opportunity to drop your questions in the chat box below. Uh, Starting with the first question that we have. So there's a question from Mahesh Vashisht. He wants to know view on Prakash Industries. So, Mahesh, we do not cover Prakash Industries, but I would request Shrikant sir to give some view from technical perspective. Yeah, sure. See, like all these metal companies, of late we have seen good amount of buying interest. Almost all the stocks from the same space are doing really well. Even though they are like most of these stocks are trading above their valuations, they are very close to their all-time highs. And in fact, a few of them are trading above their 10, 12 years of consolidation, like NMDC, GMDC. Even Prakash Industry is also very close to its all-time highest levels of around 240, 250. Currently, it is around 190, 192. But while looking at the entire setup of the stock, we are of the view that gradually it is heading towards the levels of 250, 260. Also, we cannot forget that it is into trade to trade segment, so which will keep the stock little illiquid, but the performance of this particular stock is quite encouraging, and we are expecting upside up to 250 or 260. In next maybe few weeks, it will take some time. But in case if there is any correction, then close to 180, 183 levels, the stock is having excellent support. So close to these levels, if we see the stock is dropping, then we should look for adding the stock. Otherwise, we are of the view that we should look for adding those stocks which are like already trading above their all-time highs, like NMDC or maybe GMDC. Even Jindal Steel and Power looks good, which is heading towards its all-time highest levels of 800, 840. And the reason is because whenever we see such type of breakout in the market where we are seeing broad-based activity, such type of stocks do really well. So based on technicals, such type of stocks we try to scan and cover for giving short-term recommendations. That's it. Thank you. Next question is for Pankaj. Pankaj, one participant is asking for topics from real estate. So if you could give little outlook and then give some topics, it will help. Yeah, sure. So जैसा आपने देखा है, रियल एस्टेट स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है इन द रिसेंट ट्रेडिंग सेशंस में. Reason is very clear. We have been pitching this sector and the stock for a long time. And why? Because if you look at the outlook in terms of sales, launches, and overall cash flow, all looks on the positive side. We are positive on the fundamentals. अगर आप इन्वेंट्री इन द सिस्टम की बात करेंगे तो स्टिल लोअर देन द हिस्टोरिकल एवरेज. करीबन 1.5 इयर्स की इन्वेंट्री जो दिखती है वो पास्ट ट्रेंड से लोअर है. और लॉन्च पाइपलाइन कंपनी की काफी स्ट्रांग है. बीट लोधा, डीएलएफ, प्रेस्टीज, शोभा, ऑल हैव वेरी गुड लॉन्च पाइपलाइन. And now in the next few days, you will see most of these companies will be reporting their sales volume number for Q3, where the positive outlook is there. So given all these things, we are constructive on the sector, but most of these stocks are trading in the upper end of the valuation band. So वहां पर और ये जो recent run up हुआ है उसके वजह से हमें हमारे मोस्ट जो भी हम स्टॉक्स जो हमारे कवरेज में हैं मोस्टली सारे फेयर वैल्यू के ऊपर चल रहे हैं. बट अगर आप स्टॉक के नाम
की बात करेंगे तो 2-3 स्टॉक जहां में थोड़ा पॉजिटिव व्यू है लॉन्ग टर्म के हिसाब से इज DLF वेयर वी हैव एड रेटिंग and Macrotech, Brigade, and Signature Global. So, but these stocks you can look at decline. Pankaj sir, there is one participant who has a follow-up question. Venkateswara is asking, do we see further momentum in Shobha and Macrotech? तो जैसा मैंने बोला है कि लॉन्च पाइपलाइन स्ट्रांग है, शोभा हो या फिर मैक्रोटेक। मैक्रोटेक का अगर बात करेंगे तो दे हैव वेरी स्ट्रांग लैंड बैंक आल्सो, एंड so based on that we can expect sales momentum will continue in coming quarters as well. But we'll wait for the results before we revise our fair value. Thank you. Next question is for Shrikant sir. Shrikant sir, Arun Kar is asking LIC का टारगेट क्या है 1 year में? तो देखिए, अगर LIC की अगर बात करें स्पेसिफिकली, तो आफ्टर लिस्टिंग हमने इसमें एक वन साइडेड सेलिंग एक्टिविटी देखी थी। द स्टॉक वाज अराउंड सम 900 लेवल्स, 900 प्लस लेवल इन फैक्ट। फ्रॉम देयर ऑल द वे वी सॉ द लेवल्स ऑफ 540, but now it is gaining the momentum, and it is gaining the momentum mainly because of lot of companies in which company I mean to say in which LIC invested when there was some lot of issues in terms of their overall debt concerns and NCLT issues. Now all these companies are coming out of those particular issues, and that is why we are seeing a lot of momentum in the stock. Also, if we go through with the technical pattern of the stock, then it is very clearly indicating us that it is heading for the its all-time highest levels, which is around 950, 960. It will take time, but the way there are volumes and delivery-based volumes are increasing on a weekly basis, we are of the view that if there is any correction, then we should look for adding the stocks on dips. Also, based on fundamentals, we have target of close to 900 plus for the same. And if there is any correction, then close to 820, 825, the stock is having excellent support. But if there is a view more than 12 months, then I would say that the stock can move to the levels of at least 1700 to 1800 based on wave theory. So, which will take time. It's not that it is going to happen in the near term. It is going to take a lot of time. But yes, if there are like investments, then one should keep holding to the same because we are expecting further more upside. So broadly, we are of the view that we should be buyer at current levels, more on dips for the same. Thank you, Shrikant sir. Moving on to next question. Pratik Chaturvedi is asking, how is Sami placed against other hotel brands? Arun, Yeah. can you share your views? Sure. So Pratik, see, basically Sami Hotels is one of the picks that we have actually given for this month. Even in this webinar, we have discussed the stock earlier, where we have a buy rating and a fair value of 230. तो अगर आप सामी होटल्स को देखेंगे तो उनका 13 years का कुछ इनकॉर्पोरेशन करके हुए हैं. दे हैव बीन 13-year-old कंपनी. वहां पर दे हैव द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेंट्री ऑफ रूम्स, जो बेसिकली ऑपरेशनल कीज जिसे कहते हैं. इसमें ओन्ड और लीज दोनों है. तो दे हैव बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग हॉस्पिटैलिटी कंपनीज इन इंडिया. अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे तो दे लार्जली ये एक्विजिशन लेड स्ट्रेटेजी है, जिसकी वजह से दे हैव बीन एबल टू इंक्रीज देयर ऑपरेशनल केस बाय सच अ huge scale over the past a little more than a decade. तो इसके अलावा आप देखेंगे तो इनकी जो रीब्रांडिंग जो ये करते हैं, इनकी इंटरनेशनल होटल चेन के साथ टाई-अप्स है, जैसे कि मैरियट है, ISG है, हयात है. सो ये होटल्स को एक्वायर करने के बाद उसे रीब्रांड करते हैं इंटरनेशनल होटल चेन्स के साथ, ये उसे रिफर्बिश करते हैं और उन्हें फिर एक्टिवली मैनेज करते हैं. तो व्हाट हैपेंस विद दिस इज कि इसके वजह से वहां पर जो एवरेज रूम रेट्स है, दे आर एबल टू इंक्रीज दोस एवरेज रूम रेट्स वहां पर. उसके अलावा इसका जो बेनिफिट इन्हें आता है वो आता है इन्हें रेवेन्यूज और एबिटा में. वी हैव टॉक्ड अबाउट कि इनका
डेट बुक्स में रहा है पास में, बिकॉज एक्विजिशन लेड स्ट्रेटेजी है, बट इन्होंने रिसेंट इक्विटी इशू जो ये आईपीओ किया था वहां से दे हैव रेज्ड मनी देयर, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग देयर मॉडरेशन इन केपेक्स, जो आगे जो केपेक्स करेंगे वहां पे थोड़ा मॉडरेशन होगा, जिसके वजह से इनके कैश फ्लोज थोड़े इंप्रूव होंगे एंड दे विल बी एबल टू रिड्यूस लेवरेज जो उनकी बैलेंस शीट पे है इन टर्म्स ऑफ डेट। सो ओवरऑल सामी में हम काफी अच्छा रेवेन्यू और एबिटा सीएजीआर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स, FY23 से 26 के पीरियड में। एंड आई थिंक अगर आप हमारे बाकी होटल कवरेज भी देखें वहां पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन या अपसाइड भी आप देखेंगे तो सामी गिव्स अस अ डिसेंट स्टिल अपसाइड है। हमारा फेयर वैल्यू 230 रुपीज है स्टॉक के ऊपर। दी अदर होटल जेट वी कवर इज एक शैले होटल है जहां पर, और इंडियन होटल है जहां पर हमारा फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस के आसपास है, और लेमन ट्री है जहां पर हमारा फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस से भी नीचे है ये टाइम पर। सो अपसाइड के फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आल्सो सामी होटल्स लुक्स अट्रैक्टिव। Thank you. Arun, there's one more question for you. Bobby is asking Ashok Leyland लिया है, क्या ये 220 तक जाएगा? Okay, so I'm not sure whether you're looking at a short-term this thing or a long-term, but anyways, अशोक लेलैंड पे at this point in time अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में हमारा ये टाइम पर अभी हम रिड्यूस रेटिंग है स्टॉक के ऊपर, और हमारा फेयर वैल्यू मार्केट प्राइस से नीचे है ये टाइम पर। सीवी साइकिल में भी हमने देखा है कि थोड़ा स्लो डाउन आया है। सो लास्ट 2 इयर्स सीवी साइकिल के लिए बहुत अच्छे रहे थे, हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी थी कोविड के बाद। और अशोक लेलैंड का जो ओवरऑल बिजनेस मॉडल है वहाँ कमर्शियल व्हीकल या ट्रक्स और बस सेगमेंट मेनली उनके रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हमने ट्रक सेगमेंट में लास्ट 2 इयर्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी थी, जिसके वजह से स्टॉक में काफी मोमेंटम रहा था। बट दिस ईयर हैज बीन, आप देखेंगे तो थोड़ा स्लो डाउन आया है। इनफैक्ट दिसंबर के नंबर्स आप रिकॉल करेक्टली, कमर्शियल व्हीकल वॉल्यूम्स में आई थिंक देयर वाज अ डीग्रोथ ओवरऑल इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर के जो नंबर्स आए थे इसमें। सो वी आर नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म फंडामेंटल एट दिस पॉइंट इन टाइम इन अशोक लेलैंड। But yes, I think there was some news recently in the media कि buses को EVs में convert करना है, बहुत orders आ सकते हैं, and we are seeing the trend happening. So I think the trend will continue, and accordingly, all the companies which are capable of producing EV players, EV buses, including Ashok Leyland, could benefit out of that. But again, bus is not a very big segment for Ashok Leyland. उनका truck जो है वो बहुत बड़ा segment है, bus relatively सीवी सेगमेंट में एक छोटा पार्ट, स्मॉलर पार्ट है ओवरऑल सीवी सेगमेंट। Thank you. Next question is from Pravin Gupta. He's asking for views on PNB. Shrikant sir, can you share your views? Sir, you are on mute. Sorry. So yeah, all these PSU bank stocks, they are like really gaining a lot of momentum as well as interest from the investors. Most of these stocks have shown the formation of shallow correction, and whenever there is a momentum in the market, we see upward activity in almost all the PSU banks. In fact, they are raising money and still they are crossing their previous highs, and they are hitting new highs. So such type of pattern is like completely unusual. Like we have not seen such type of formation in the past. पास में कभी भी अगर किसी PSUs ने या किसी PSU बैंक ने जब भी फंड रेज किए थे, उसके बाद हमने हर एक स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन देखा था। बट इस बार का मार्केट ही कम्प्लीटली अलग है, और इट्स गुड इनफैक्ट देखा जाए तो, बिकॉज OFS आने के बाद भी अगर स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है, दैट मीन्स उसके अंदर जो भी इन्वेस्टर्स है, लाइक अभी बैंक ऑफ इंडिया ने समवेयर कुछ 2500 से लेकर 4000 करोड़ का कुछ ऑफर फॉर सेल रखा था, एंड इन दैट ऑल्सो they get a very strong response. So it is very clear that investors are like now ready to buy and hold PSU stocks with a view of at least next 12 to 18 months. I'm going to say they are becoming long-term investors, and that's the reason we are seeing sustained rally in the markets. If we just go through with the fundamentals of the PNB, then it is trading at expensive valuations. The price to book value is somewhere close to 1.2, which is very high.
And again, if we just go through with the fair value of the stock, then it is somewhere close to 86, 87, but stock is around now 98, 99, and PNB is also going to raise some money from the market. So all these things, all these particular news flows are there. But if there is a view of next at least 2 to 3 years, then again at these levels, all these stocks are looking at least at reasonable levels. So yes, we need view of at least next 2 to 3 years, but at current levels with current fundamentals, all these stocks are expensive except State Bank of India, which is currently trading at 640, 645. There is still upside of nearly 10 to 15%. We are expecting stock to move towards 720, 750. So that's the best case scenario that we are defining based on the fundamentals. But at these levels, the strategy should be to buy these stocks if there is any correction in the market. Thank you. Now, due to time constraint, I'll take last two questions. So there's one question on Bharat Electronics. Pankaj, can you take this one? Can you share Yeah, your sure. views on the same? Yeah. Yeah, sure. So Bharat Electronics, if you look at, we have a sell rating and we have fair value of 118. The stock has seen strong rally because the Q2 results were good and overall the defense stock has also done well. The PSU stocks have also done well. But when we look at the management commentary in the Q2 results, so that doesn't sound that confident that they will be able to maintain or revise the guidance in H2 FY24. So जो सेकेंड हाफ के हिसाब से मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी सी एनकरेजिंग नहीं थी एंड अगर करंट वैल्यूएशन भी आप देखेंगे तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 33 टाइम्स FY26 अर्निंग्स तो वैल्यूएशन साइड भी वो प्रीमियम पे चल रहे हैं तो वी हैव अ सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 118. Thank you. Next question is for Amit. Amit, Narendra Prajapati is asking for views on Nestle India, and there's one more query on Sapphire. So if you could answer both. Yeah. नेस्ले में हमारा एड रेटिंग है विद टारगेट प्राइस ऑफ 24,500. नेस्ले इंडिया का अगर आप लास्ट थोड़े क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस देखो तो काफी इम्प्रेसिव है बोथ ऑन रेवेन्यू एंड वॉल्यूम फ्रंट. इनफैक्ट अगर आप Q3 का परफॉर्मेंस देखें तो 10% डोमेस्टिक रेवेन्यूज बढ़ा है और 21% ईयर ऑन ईयर एबिटा बढ़ा है विद 5% वॉल्यूम ग्रोथ और सिमिलर ट्रेंड रहा है प्रीवियस कुछ क्वार्टर्स में. तो ओवरऑल रेजिलिएंट वॉल्यूम और टॉप लाइन ग्रोथ रहा है विद मार्जिन रिकवरी फॉर नेस्ले फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स और हमें लगता है ये ट्रेंड आगे भी रहेगा. ओवरऑल हमें ऐसा लगता है नेस्ले इज वेरी वेल पोजिशन टू डिलीवर इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ ड्रिवन बाय ब्रांड एंड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो. देयर इज आल्सो थ्रस्ट ऑन कैपेसिटी एक्सपेंशन और रूरल पेनिट्रेशन पे भी फोकस है और सरपास करेगा उसका प्री पैंडेमिक एबिटा मार्जिन एज रॉ मटेरियल जो प्राइमरली डेयरी है वो थोड़ा सा काफी ईज हो चुका है और हमारा टारगेट है 24,500 विद फेयर वैल्यू ऑफ 24,500 विद एड रेटिंग और स्टॉक एक्स स्प्लिट हो चुका है 1:10 रेशियो में और फ्रॉम टुमारो इट विल बी ट्रेडिंग एक्स स्प्लिट. ऑन सफायर वी हैव अ बाय रेटिंग. इनफैक्ट QSR स्पेस पे हमारा थोड़ा सा नेगेटिव व्यू है प्राइमरली ड्यू टू वीकनेस इन डिमांड स्पेशली इन द मास सेगमेंट. बट QSR स्पेस में सफायर पे हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू है. वी हैव अ बाय रेटिंग विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1700. हमें लगता है सफायर 19% EBIT या CAGR देगा ओवर द नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स even after factoring in some slowdown and inflationary pressure. हमें लगता है कि सफायर एक फास्टेस्ट ग्रोइंग QSR कंपनी है इंडिया की और यही उसका पोजीशन रहेगा फॉर द नेक्स्ट 2-3 years. Sapphire is also very well placed to ride on the QSR tailwinds and capitalize on relative under-penetration of Pizza Hut and KFC in India. Valuations भी relative basis पे inexpensive है
तो ओवरऑल सफायर ऑफर करता है फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमारा वैल्यूएशन डीसीएफ मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है और हमारा बाय रेटिंग है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 1700। Thank you. With this, we have reached the end of the webinar. So I would like to call Shrikant sir to give his closing remarks. And along with that, I would like to squeeze in just one question. Sir, Sandeep Ghosh was asking which are the main sectors in India to grow. So if you could share your inputs on this also. Yeah, definitely. See, like in the previous year, I would to say in the calendar year 2023, we saw rally in almost all the sector. It was broad-based rally, and there were like number of concerns, but still India managed to overcome on that, and we saw a spectacular rally in the market. It was like after the state elections specifically, the market managed to surpass the level of 20,000 confidently. And now, because of the overall confidence level, which is increasing in the market, we are seeing upward activity on a day-to-day basis. But broadly, we are of the view that we are at median levels. What I'm going to say is that if we consider the EPS of 2026, then we are at base case level. तो अगर बेस केस लेवल की अगर बात करें और FY26 के EPS की अगर बात करें तो वी शुड बी समवेयर क्लोज टू 22,000 लेवल्स, और अभी हम उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वी आर सीइंग सम प्रॉफिट बुकिंग whenever there is like rally in the market and it goes nearer to the levels of 22,000, we some profit taking, and weekly the market comes back to the levels of 21,000. But if we just go through with the this PE bands, then at base case levels, Nifty should trade somewhere close to 22,000 levels. In the bear case scenario, if there is like any concern, if there is like if something goes wrong in the market, then we may see the levels of maybe 19,500 or 400 on the downside. That's the maximum downside that we are expecting based on fundamentals. But if there is any rally and if the market starts discounting to the bull case scenario, then in that case the market may even go to the levels of 24,500, which is the 22 times to the EPS of 2026. So broadly, we are of the view that if we consider the view of next 12 months or more, then we are at median levels. But if we consider just this FY24, FY25, then we are at extreme levels. And that's the reason we need to be more and more careful in terms of investing in these markets. Yes, we should keep investing in this market, but try to invest whenever there is a correction in the market. अच्छा, अगर सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो हमें लगता है कि yes, like someone was asking about real estate. Yes, we are bullish. We have a bullish view on the real estate sector. But the thing is, what most of these stocks are trading way above their current fundamentals, and that's the reason we are of the view that in case if there is any pull off, then we should look for adding the stocks. Also, we have to just go through with the commentary and the quarterly numbers of Q3. So all this will decide the next course of action for the real estate space. But the way there is interest, and now if I start entering into these markets, then definitely they are going to buy those sectors which are like good in terms of its diversification. तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि अगर मार्केट में अगर एक ब्रॉड बेस तेजी होती है, जैसे हमने 2008 में देखी थी, तो हमने एक अच्छा मोमेंटम देखा था रियल एस्टेट स्पेस में अलॉन्ग विद BFSI सेक्टर. Actually, real estate sector supports to the economy in a big way. So that's the reason we are of the view that ये sector definitely limelight में रहेगा, but let the market like come down to the reasonable levels. साथ ही साथ हमें लगता है कि BFSI ये हमेशा हमें फोकस में रखना है, बिकॉज BFSI एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे हमें लाइक मल्टीपल ऑप्शंस है टू इन्वेस्ट फॉर. हाउसिंग कंपनीज है, NBFCs है. अगर इंटरेस्ट रेट कट का अगर कोई अनाउंसमेंट अगर आता है आने वाले फ्यूचर में, तो सब NBFCs परफॉर्म करेंगे. साथ ही साथ हमें लगता है कि जो प्राइवेट बैंक्स है, PSU बैंक्स है, वहाँ पे और भी इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं, बिकॉज अगर FIs को अगर
इस पर्टिकुलर मार्केट में आके अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अगर करने हैं तो सबसे पहले अगर उनका कोई फेवरेट अगर सेक्टर होता है और जो क्लीन सेक्टर होता है कि जहाँ पे काफी क्लैरिटी रहती है इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल्स, तो वो होता है बीएफएसआई। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी लॉट ऑफ बाइंग। अगर कॉन्ट्रा बाइंग अगर इस मार्केट में आनी है, और मुझे लगता है कि शायद अगर रेट कट की जो अनाउंसमेंट चल रही है, और जैसे कल फेड मिनट्स हुए थे, देयर वाज लाइक क्लैरिटी दैट यस रेट कट इज गोइंग टू कम, बट इट विल कम maybe after March 2024. But yes, it is like something which is still open. And yes, if the announcement comes, then we can see activity in technology companies also. But broadly, we are of the view that we should focus more on BFSI, real estate, as well as pharmaceutical companies. So these are the sectors. In fact, FMCG companies, there also we need to be more and more selective, because the way they have underperformed in last 12 to 18 months, and the volume which is there, I think volume growth is not at all there. But if the India is going to do well, then we are going to see uptick in the FMCG sector also, but it will take time. So we need to be like patient and keep buying, keep faith in the India story. But yes, the strategy should be to buy on dips. Thank you. Thank you, sir. Hope our participants liked the webinar. Also, we would like to apologize for the technical glitch we had earlier in the audio. So, guys, overall, please share your feedback in the comment box so that we can bring you even more interesting insights from research desk. And just a quick reminder before we wrap, do follow us on our social channels, Telegram, Instagram, and Twitter if you haven't already, for regular research updates and stock ideas. Thank you.